and grow crops. Right, small. Okay, small. Right. Okay. Look from the board. From first answer. Yes, it's first answer. I am writing the answer. Look at on the board. I have written it down. You can copy it from here, Ishal. Okay. Write first answer. This is the first answer. Okay. Science book, page number 7. And this is the first answer. Teacher, houses. After What? houses. Teacher, after houses. And grow crops. Fast, Isha. Build houses and grow crops. Teacher, done. Good. You should send me. Question number 2 is, what do you see in a forest? So write down. Excuse me. Yes. What is plains? What is plain? Plains. Yes. Teacher, show us properly. अच्छा तुमको समझ नहीं आ रही है क्या कह रहे हो? Yes, yes, plains. प्लेन्स सर हमने पढ़ा था ना पीछे बुक में चैप्टर में ये लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड, जो बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड का, उसको हम प्लेन्स कहते हैं. यहाँ पे हम बहुत इनके सिटीज टाउन्स और मोस्टली पीपल जो होते हैं वो प्लेन्स में रहते हैं. ठीक है. और यहाँ पे जो है वी कैन बिल्ड हाउसेज, सिटीज, टाउन्स, बिल्डिंग्स, anything we can build over on the plains. Okay. Okay, thank you. Okay, good. Okay, write down the next answer. Excuse me, teacher. जी. ये बोर्ड सही से नजर नहीं आ रहा. प्लीज आप जरा मोबाइल को एक जगह में रखिए. वो बार बार मूव हो रहे तो शेड आ रहा है ऊपर. बच्चे नहीं देख पा रहे. अभी आ रहा है? थोड़ा सा और अगर फोकस हो सकते हैं. बस ठीक है. अब इसको नहीं, थोड़ा पीछे करें क्योंकि वो आधा हो गया. और पीछे. बस ठीक है. अब Answer number 2 is to grow. different types of trees. Yes, teacher, what comes after grow? Teacher, what comes after grow? What? Sorry, say it again. What comes after grow? Grow, write crops. CROPS, crops. Crops. C and O-P-S. C Different types of trees and large number of animals. P S. Right, full stop. And Right, next answer. Hurry. Look. large Right. Read the question. number of Read the question. What you see in the forest? Right, fast. When you can't see, then ask the teacher. रजा, आप लिख रहे हो?
Okay. Teacher, I done it. What is next? Okay. Wait for other students. Teacher, I cannot see the T letter after off. Trees. TREES. Different types of trees and large number of animals. Different types of trees and large number of animals. Answer number 2 is different types of trees and large number of animals. What we see in the forest? Answer is different types of trees and large number of animals. Done, teacher. Okay, good. Teacher. टीचर क्या है थर्ड वन अभी मैं लिखवाती हूँ, 1 मिनट, बाकी सब भी लिख लेना, फिर मैं लिखवाती हूँ. Okay. All of you have done class? Yes. 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 Jahan Seb, have you done? No, मैम अभी मैं कर रहा हूँ. अच्छा चलो कर लें. Arshia, Habiba, turn on your camera. Okay, teacher. Question number 3 is what are deserts? So write the answer. Deserts are dry. Teacher, what is the And second one? what? Which What is spellings? the second one? Second is different types of trees and large number of animals. And Deserts are dry and hot lands.
Answer number 3 is deserts are dry and hot lands. Class, can I raise answer number 2? Who is saying no? Sure. Okay, class, I'm going to erase answer number 2. Answer number 4. Why do houses in hilly areas have sloping roofs? Answer is because it often rains. This is question 5. Yes, sorry. Yes, Asad, you are right. Teacher, question number 4. Yes, I'm going to write answer number 4. Wait. Why do few people and animals live in deserts? Question number 4 is why do few people and animals live in deserts? The right answer is because deserts are very hot. Deserts are very hot. Class, have you done answer number 3? Yes, teacher. Can I raise it? Yes, teacher. Yes, teacher. No, answer number 3, Aisha. I'm going to raise answer number 3. Teacher, it done for Question number 4 में मैं 4 नहीं रेस कर रही, मैं 3 रेस करने लगी हूँ. ठीक है? क्लास में आंसर नंबर 3 रेस कर रही हूँ. अगर किसी ने 3 नहीं किया तो मुझे जो है वो स्टॉप कर देना. ठीक है? ठीक है. टीचर पिक्चर नहीं दिख रही. अभी नजर आ रहा है? Teacher done it. Okay, good. Question number 5. Why do houses in hilly areas have sloping roofs? Write the answer because it often rains in hilly areas. These roofs let the rainwater
flow easily. Flow easily. You put there's the light, so I cannot see. Now, Yes. can you see? Yes. Because it often rains in hilly areas, these roofs let the rainwater flow easily. Teacher, so I can see. Here, No. here, Yes. Teacher, I can't see. आप कहाँ पे हो? क्या लिख रहे हो? कौन सा word लिख? Often rain. Often rains. Often rains in hilly areas. Because it often rains in hilly areas, these roofs let the rainwater flow easily. टीचर आपने दोबारा हटा दिया. अब आ रहा है नजर? विशाल, आपको अभी नजर आ रहा है? Yes. ओके. Teacher, please show me. Teacher, I can't see. अभी नजर आ रहा है? No, teacher. Yes. Again. Again. Now you can see. Teacher, this side the board. This side. Yes. More. टीचर नजर नहीं आया. This आप side. कौन सा? This side. Yes, that's better. Teacher, these roof में आप. And these roofs, आगे लिखो let, L-E-T, let. L-E-T, let the, T-H-E, the. Rainwater, R-A-I-N, rain. Or W-A-T-E-R, water. Let the rainwater
Teacher, what is the sixth one? Wait a minute, Harir. Rainwater. Rainwater flow easily. FLOW flow easily. EASILY easily. You're done. Good. Excellent and right. Class, all of you have done? Yes, teacher. Okay, now I'm going to write answer number 6. Teacher, don't raise the question. No, I'm not raising. I'm not raising answer number 5, Vishal. I'm only raising answer number 4. Water easily. Question number 6 is, where do you find most of the water in the earth? Curious as the Write down the answer. Rivers, रिवर्स वेयर कहाँ से आंसर करते हैं रिवर्स लेते हैं आप lake, अर्थ पे कहाँ से आपको वाटर मतलब आरी भी ओशन का वाटर तो आप नहीं पीते ना हाँ लेकिन रिवर आरी भी wait. VER Class, please mute your mic. Okay, now can you see it? Can we escape? Rivers, lakes, ponds, and seas. On the Teacher, don't see your camera. I can't see phone. Now you Yes. Teacher, don't see your camera. why you don't see? अभी नजर आ रहा है? Yes, teacher. Oh, good. Be quick, class. Let me shop your pencil. Teacher, I'm done. Word. done Okay, good. Arshia, Ishal, and Habiba, turn on your cameras. Okay, teacher. Good. Teacher, done. Okay, good. Please Teacher, mute your are you mic. class. done? Okay, Teacher, good. Very good. Okay, Abdul Rahman, please mute your mic. I have done. Good, very good. What is this? Teacher. Give me the eraser. Okay, Wait, good. give me the eraser. अब्दुल्ला जहां जेब आपने कर लिया है? No, ma'am. ओके मैम अभी मोहम्मद रजा आपने मैम अभी लास्ट लाइन बाकी है. ठीक है मोहम्मद रजा आपने कर लिया है?
Class, please mute your mic. Mohammad Raza. Mohammad Raza. मोहम्मद रजा आपका कंप्लीट हो गया है? राइट फास्ट। ओके गुड। जी जी, कौन बुला रहा है? Give some space after one word. Yes, just little small space, and don't give space inside the word. मैंने कहा वर्ड के अंदर स्पेस नहीं देनी, ठीक है? हरीर अपना माइक म्यूट करें बेटा। Ask. Teacher, please get side. This side. Move the board this side. This side? Yes. A little down. Upward. That's okay. I cannot see. Teacher, but she's writing question number 5, so she cannot. अच्छा अच्छा, okay okay. Now can you see it? Yes. Pencil side. And don't give space inside the word. Right. अब मुझे वर्ड के अंदर स्पेस ना नजर। When the word finish, right? Teacher done. Okay good. Teacher done. Okay good class good. वर्ड नजर नहीं आ रहा सही से। कौन सा वर्ड लिख रही हैं? Rain. जी दोबारा बताएं। Rain. वो बिल्कुल हाफ नजर आ रहा है, साइड पे वर्ड्स नहीं नजर। अभी आ रहा है? दूसरी साइड से नहीं आ रहा। Shall write बेटा। यहाँ से? Yes. अभी आ रहा है? Yes, sure. Last line, Vishal, are you writing last line of answer number 5? She's writing because it often rain. Okay, you are writing from the start. Yeah. Now look, shall write fast. It often rains in hilly areas. These roofs let the have you done till hilly areas, Ishal? Ma'am, I go to washroom. Yes, you can go. These roofs let the rainwater flow easily. Excuse me. Yes. Have we done the fill in the blanks and the match the following? Yes, we have done it, Asad. I don't have. Okay, ask me in personal. I will give you the picture. Okay, Okay. send it to you. You were absent last day. We have done it on Friday. Okay.
Let. Teacher, get this. Move the board this side. Okay, ask the question. Ask the teacher what comes after this. Which sentence are you writing? Which word? Rules let. The roofs let the rainwater. ओके क्लास, जिसने कर लिया है वो एक मिनट में आपको बताती हूँ आप लोग कौन सी बुक्स निकाले हैं. रेन वाटर फ्लो इजीली. Take out your English books and notebooks. इंग्लिश बता मुझे. इधर इंग्लिश. Have you done, Ishal? Number 5. Easily. EASILY. Page number. Wait a minute. Question number 6. Yes, right. This is the answer number 6. Rivers, lakes, ponds and sea. टीचर कौन से बुक निकालनी है? इंग्लिश की बुक और नोटबुक दोनों. टीचर पेज नंबर. एक मिनट में बताती हूँ. ये जरा शाल कंप्लीट कर ले फिर मैं आप लोगों को खोल के ना फिर बताती हूँ पेज नंबर. ओके. आप लोग बल्कि पहले नोटबुक्स निकाले, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. क्लास, टेक आउट योर नोटबुक्स फर्स्ट. We will do question answers. Take out your notebook. English notebook copy. ओके क्लास, ये क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों ने अपने कॉपी पे लिखने हैं क्योंकि ये बुक के पीछे गिवन नहीं है. मैम सॉरी मेरे से कट हो गया था. क्या हो गया? कट हो गया था मेरे से. क्लास, टेक आउट योर नोटबुक. मोबाइल टीचर कहेंगे जल्दी करो दुआ. प्लीज माइक म्यूट करें. उसी पे कर लो ना क्योंकि आपने मुझे क्लास प्लीज माइक म्यूट करें. में जाओ बुक्स. इस तरह आप लोग अपना जो है ऊपर जो है वो नेम मेंशन करें पहले लेफ्ट हैंड साइड पे. एंटर विद क्लास वर्क. राइट. इंग्लिश कंप्यूटर. इंग्लिश. हाँ ये इंग्लिश वर्ड बुक है. क्लास
Science. Write it like this on the top of your page. Date, classwork, and day. कौन सी बुक थी? All of you, please mute your mic. I don't see your camera. Now can you see it? Yes. सबसे टॉप पे अपने पेज के इसका एक साइड पे डेट लिखें, सेंटर में C.W क्लासवर्क और साइड पे फिर मंडे के स्पेलिंग। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ। Teacher. Class, please mute your mic. यार आंसर इसके कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ है इसके फिर? अब्दुल्ला, म्यूट योर माइक। हरीर Teacher. अपना माइक म्यूट करें। जी ये कौन सी बुक है? इंग्लिश की नोटबुक निकालनी है अर्शिया। ओके। प्लीज अपना माइक म्यूट करो अर्शिया। ओके